Jai Shri Mahakal. I hope I'm live and audible. Let me just write it down. So, in today's video, we are going to discuss about Saturn and the mistake of Saturn that all of us are doing, and that's the typical secret of Saturn. If you understand this secret and if you start using it for your own betterment, you will see good results coming from your Saturn, which is Shani Graha. सबसे पहले हम शनि के बेसिक ट्रेड्स सैटर्न के बेसिक ट्रेड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज सैटर्न सैटर्न इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इफ वी सी द स्काई द प्लैनेट विच इज सबसे ज़्यादा दूर जो फर्दर एस्ट डिस्टेंस पर प्लैनेट है दैट प्लैनेट इज सैटर्न और ऋषियों ने शनि के बाद वाले ग्रहों को ग्रह नहीं लिया वो प्लैनेट हैं यूरेनस इज अ प्लैनेट नेपच्यून इज अ प्लैनेट बट दे आर नॉट अ ग्रह एंड इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रह एंड अ प्लैनेट तो इसके ऊपर हमने हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में डिस्कशन की है मैं आपको बेसिक में फटाफट से बता देता हूँ इज सूर्य अ प्लैनेट No, sun is a star, right? Similarly, moon is a satellite, but we take them as a graha. So there is a difference between a graha and planet. So Neptune and Uranus could be the planets, but they are not the grahas. That's why we do not take them in Vedic astrology. Okay? So if we see the sky, the planet, I'll not use the word planet from now, it's graha. जो सबसे दूर वाले ग्रह हैं वो शनि है and what's the furthest distance when you look up in the sky that's the furthest you can look to सबसे दूर आप कब देख सकते हो जब आप शाम के समय लेटे हुए हो और आप सिर्फ आसमान में देख रहे हो जब आप आसमान में देख रहे हो वो आप सबसे दूर देख रहे हो इसी तरह से सैटर्न आपसे सबसे दूर है अब आपको समझ में आया कि कैप्रिकॉन साइन सैटर्न के पास क्यों है सैटर्न के पास कैप्रिकॉन साइन क्यों है बिकॉज कैप्रिकॉन आकाश है व्हेन यू लुक अप इन द स्काई दैट इज कैप्रिकॉन Now, how is that Capricorn? How is that 10th house? The Surya is in the 10th house when it's at its peak. जब सूर्य दोपहर के समय बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं तो वो 10th हाउस में होते हैं और वो जो बिल्कुल सर के ऊपर है that is Saturn, Capricorn sign. That is why the Saturn is having the Capricorn sign. Everything is in basics. I always tell people basic is advanced. If you understand the basics, you don't need to do the advance because you will eventually get to know the advance by yourself. So talking about Saturn is the furthest planet. Saturn is controlling the air element in our body. And that is why if the air element is in trouble, you will see a lot of troubles happening in your life. Because with that air, the fire is also balanced out. With that air, the wind is also automatically balanced, right? The water is also balanced out with the wind. I'll not go in that depth because we are going to talk basic on it. But yes, we are going to talk about the most beautiful thing about Saturn, that is down to earth. शनि डाउन टू अर्थ है शनि बोस्टिंग नहीं है शनि फुकर बनता नहीं है विच प्लैनेट इज फुकरी फुकरी कौन सा प्लैनेट है फुकरी राहु है बोस्टिंग इज राहु आई गॉट दिस कार आई गॉट दैट अरे मेरा तो काम कार बहुत अच्छा चल रहा है आई एम अर्निंग $1 billion a month अरे आई ओन अ Rolls Royce आई हैव अ Ferrari so those things are more related to Rahu but Saturn is down to earth. I have seen people who come to me with a very strong Saturn and they will come on a really cheap car or they come on a
even sometimes they are coming by taxi, and when they talk to me, they are asking about a $1 million investment. सर $1 million है, कहीं इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर करेंगे? All right, I'm having a call. I'll just put it on voicemail. Yeah. So that kind of thing. Okay, so Saturn is being down to earth. यदि जहां पर भी आपका Saturn होगा, if you boast for that house, for example, your Saturn is in the second house and you are saying, अरे मेरे पास तो बैंक में बहुत पैसे हैं, मेरे बैंक में बहुत पैसे, अरे मेरी तो फैमिली बहुत अच्छी है, you will see the results reducing in your life. So never ever do that kind of boasting. If you do the boasting of the planet, that is Saturn planet, whatever house the Saturn is in, you will be spoiling that house. I have seen people with 10th house Saturn. 10th house Saturn is a really, really, really strong Saturn. 10वें घर का शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शनि माना गया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, 10th हाउस सैटर्न होगा और 2-4 क्लाइंट्स बन जाएंगे, 2-4 जॉब में प्रमोशन हो जाएंगे, तो दे स्टार्ट पोस्टिंग, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, अरे मेरे पास ये है, अरे मेरी तो जॉब बहुत अच्छी है, अरे आई हैव दिस बिजनेस. इफ यू start telling people with a lot of appreciation of that, you will see the reduction of it. आप नोटिस करेंगे, यदि आप उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताना स्टार्ट कर देंगे, अरे मेरा तो सैटर्न, मतलब मेरा तो 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, आई हैव दिस, आई हैव दैट, माय करियर इज लाइक दिस, माय रेपुटेशन इज लाइक दिस, I have these kind of links with the government, you will see those links reducing, you will see your reputation coming down, you will see your business coming down. So that's the problem. I'll come on the comments in a minute. So that's the problem. So wherever is your Saturn, remember this secret, do not boast about that house. जहां शनि है उस घर के रिलेटेड फुकरी नहीं मारनी है, पंजाबी भाषा च साफ, ठीक है. जहां सैटर्न है वहां चुपचाप धीरे धीरे स्लोली रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करो, और जितना उस घर को छुपा के रख सकते हो, जितना छुपा के रख सकते हो. So Saturn in the second house, I always tell people कि अपनी फैमिली को ज्यादा एक्सपोज मत करो. There are a lot of celebrities who have Saturn in the second house. उनकी second half of their life में बहुत तरक्की हुई, but now their family would be facing issues because their family is not hidden. You have to hide the house. Saturn is darkness, right? The सूर्य की लाइट वहां तक बहुत कम पहुंचती. So that is the darker house. So make sure that wherever is your Saturn, that particular house has to be dark in your life. Nobody should be knowing much about it. I'll be coming on each house. मैं आपको एक एक करके सारे घर बताता हूँ. Remember this. It's a basic secret of Saturn. If you understand it, you're gonna do great. ठीक है, आम पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. So Saturn in the first house. If you are gonna boast about your अरे मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बहुत है, अरे मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आई डू दिस, आई डू दैट. एंड रिमेंबर सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस इज आल्सो MKS, मरण कारक स्थान पर है शनि. लगन में शनि मरण कारक स्थान पर होते हैं. मैंने मरण कारक नहीं कराया अभी, विल डू मरण कारक का सून ऑन दिस चैनल. तो फर्स्ट हाउस सैटर्न, डू नॉट बोस्ट अबाउट योर हेल्थ, डू नॉट से कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, डू नॉट से कि अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. चुपचाप करो. 20 minutes of doing something is better than 2 hours of thinking something. So just start doing. If your Saturn is in the first house, that's the easiest remedy you can do. Saturn in the second house, do not say I have a very good family, do not say I have a lot of money in my bank, do not say that I love eating this, I love eating that. I have seen people with second house Saturn, they love some certain kind of food and then doctor puts the restriction on them for it. डॉक्टर मना कर देता है कि आपको ये चीज नहीं खानी है. तो चुपचाप, do not tell people you like eating this, do not tell people about your bank balance, do not tell people about your family. That's the easiest remedy. Saturn in the third house, do not expose your short travels before that happens.
जब तक आप ट्रिप पर चले नहीं गए हो, लोगों को ट्रिप के बारे में नहीं बताना। मैंने बहुत लोगों की ट्रिप्स कैंसिल होती देखी हैं जब थर्ड हाउस में सैटर्न होता है। वो पहले ही बता कर रखते हैं, अरे मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, अरे मैं तो थाईलैंड जा रहा हूँ। एंड मोमेंट पे घर पे कोई बीमार हो जाएगा, जा नहीं पाएंगे, या कोई भी एबीसी दिक्कत आ जाएगी। डू नॉट डू दैट, डू नॉट। एंड रिमेंबर, थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन। तो ऑल इन ऑल किसी भी चीज में आपको डाउन टू अर्थ ही रहना है। आपके पास हो भी वो चीज तो भी कहना, अरे यार तेरी बहुत अच्छी है। Okay, for example, you have some certain kind of shoes, because Saturn is related to shoes, so I'm going to give you that example. And you see somebody wearing really good shoes, and you also have those shoes, or you have the better shoes. You should appreciate his shoes rather than telling के मेरे अच्छे हैं। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना, उसकी तारीफ कर देनी है। दैट्स द इजीएस्ट रेमेडी फॉर द थर्ड हाउस सैटर्न। ठीक है, बिकॉज इट इज ओवरऑल कम्युनिकेशन, एंड द सैटर्न हैज टू बी सीन इन योर ओवरऑल कन्वर्सेशंस, ओवरऑल स्पीच। नाउ सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, व्हीकल्स, हाउसेस। आप कहना शुरू कर दोगे अगर कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरी गाड़ी तो बहुत बड़ी है, मेरे पास तो BMW है, ऑडी है, रोल्स रॉयस है, वॉट एवर, मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में तो वो। इफ यू स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट इट, यू विल सी द रिडक्शन हैपनिंग इट in it. And if you stop telling people, you don't tell people कि मेरे पास हाँ यार बस जो है बहुत अच्छा है, जो परमात्मा ने दिया बहुत अच्छा दिया। सो जब आप डाउन टू अर्थ रहना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्थ हाउस आपको बेटर रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। आपके सुख बढ़ते जाएंगे, आपकी लग्जरीज बढ़ती जाएंगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ते जाएंगे, घर, गाड़ियां, बंगले, ये सब बनते जाएंगे। दैट्स द फोर्थ हाउस सैटर्न। So, simple rule, stay down to earth, keep it hidden. फोर्थ हाउस सैटर्न के लिए मैं एक चीज और बताऊंगा, डू नॉट एक्सपोज योर एड्रेस। अपना एड्रेस नहीं बताना, मैं कहाँ रह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है, डू नॉट टेल पीपल वेयर यू लिव, डू नॉट इनवाइट पीपल वेयर यू लिव। Even if somebody comes to your place, like for example somebody is there and they need a party from you, arrange the party outside. कहीं बाहर पार्टी अरेंज करो, घर पर पार्टी मत करो। दैट्स द फोर्थ हाउस सैटर्न। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ हाउस सैटर्न। डू नॉट से कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे। रिमेंबर, फिफ्थ हाउस सैटर्न, दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर किड्स, ऑब्सेस्ड। मेरे को तो बस मेरा बेटा सब कुछ है, मेरी बेटी सब कुछ है, दूसरों का कोई है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। और लेटर आप देखोगे धीरे 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 करके बच्चे फादर से दूर हो जाएंगे, बेटी से दूर हो जाएगा बाप, या मदर से दूर हो जाएगा, जिसका भी सैटर्न फिफ्थ में। डू नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद एनीबडी, ट्राई टू हाइड देम। आई हैव सीन पीपल सेंडिंग फिफ्थ हाउस सैटर्न वाले अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, फिफ्थ हाउस सैटर्न वाले अपने बच्चों को अपने से दूर भेज देते हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर वो अपने बच्चों को खुद से दूर भेजते हैं तो वो बच्चों की बेटरमेंट के लिए भेजते हैं। दैट्स फिफ्थ हाउस सैटर्न। और फिफ्थ हाउस की मैं एक रेमेडी और बताऊंगा, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज योर फ्यूचर। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप फ्यूचर बनाने के लिए जल्दबाजी करोगे तो यू विल बी सफरिंग। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, गो स्लो, आराम आराम से फ्यूचर बनने दो। ज्यादा जल्दबाजी करोगे नुकसान में रहोगे। ठीक है, सिक्स्थ हाउस सैटर्न, इस पे साइंस की भी मैं एक बार इसके बाद बात करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली विल सी इफ वी हैव टाइम और नॉट। नेक्स्ट थिंग इज सिक्स्थ हाउस सैटर्न। कभी भी ये नहीं कहना कि मैं परफेक्टली हेल्दी हूं। ऑलवेज हैव सम कंप्लेंट रिगार्डिंग योर हेल्थ, ऑलवेज हैव सम कंप्लेंट, चाहे छोटी, अरे यार थोड़ा सा ना सिर दुख रहा है, यार आज थोड़ी बैक एक है, या मेरे ना एंकल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लोगों को इल्यूजन में रखो कि आप बीमार हो, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता लग गया कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बीमार हो जाओगे। एंड ऑलवेज कीप सम अमाउंट ऑफ लोन ऑन यू। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल हैविंग सिक्स्थ हाउस सैटर्न टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करो और क्रेडिट से ही अपनी लाइफ जियो, क्योंकि जब आप क्रेडिट से अपनी लाइफ जियोगे तो आपको डेबिट से जी हुई लाइफ से ज्यादा बेनिफिट होगा। दैट इज सिक्स्थ हाउस सैटर्न। सेवंथ हाउस सैटर्न, ओके, सो सेवंथ हाउस सैटर्न, देयर वाज अ केस, a guy few years back,
उसके आगे पीछे लड़कियां थी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, अरे मेरी तो ये गर्लफ्रेंड है, मेरी वो गर्लफ्रेंड है, ऐसा है वैसा। एंड आज उसके बाद शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसने उस घर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दिया, बहुत सारे लोगों को बता दिया कि मेरी तो ये गर्लफ्रेंड है, मेरा तो ये पार्टनर है, मेरी तो ये पार्टनर है। डू नॉट टेल पीपल अबाउट योर पार्टनर, कीप योर रिलेशनशिप हिडन. If you will keep your relationships hidden, you will see the better results coming from the Saturn in the 7th house. Okay, if you are doing some partnership, it should be the hidden partnership. I was sitting in some cafe and हम वहाँ खाना खा रहे थे, तो हमने जनरली मैंने पूछा who is the owner here. My client was owner there. I didn't knew it. It was secret partnership, just like government is your silent partner. Right? Government is your silent partner. Whatever you are doing, whatever you are earning, you have to pay some part to the government. So being the silent partner is the 7th house Saturn. And if you really want a good wife, do not expose your wife, do not tell other people about your partners, and do not say कि मेरी वाली अलग है. ठीक है, वो मेरी वाली अलग है वाला काम ज़्यादा खराब हो जाता है. Then Saturn in the 8th house. Before moving to the Saturn in the 8th house, let's go through the comments. I'm gonna take just 1 minute. So Sayantan Baral sir, हाँ जी सर, कैसे हो? ठीक हो? I hope you are well. Rude dude, 6th house. Sir, do not boast in your daily life, okay? Again Baral sir, Aries Lagna, Saturn is in the 3rd house. Very nice. Every day you should be staying down to earth, speaking in a slow voice, talk slowly, talk deeply. That's the 3rd house Saturn. Okay. Hardik ji ne kaha hai, my Saturn is in the 12th house with Ketu, but my Saturn is retro and 0 degrees. Sir, you are blessed if you have Saturn retrograde. If you have not watched my video on the Saturn retrograde, go search and watch it after it. आकाश जी कह रहे हैं 12th house Saturn. I'll come to you, sir. वैभवी जी ने कहा है Saturn and Ketu in the 2nd house. 2 different padas of Uttar Bhadrapada. Okay, that's nice. Saturn plus Ketu. Remember, Saturn is the karma, Ketu is cutting off the karmas. So Vaibhavi ji, you will be cutting your karmas very fast on a really 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 quick phase. बहुत ज़्यादा स्पीड में आप अपने कर्मास को कट करोगे अगर ये सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं है तो. ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव टू सी द डिग्री ऑफ द सैटर्न एंड द केतु. अगर तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं तो प्रिडिक्शन अलग होगी, अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो प्रिडिक्शन अलग होगी. ओके, बट या आई रिकमेंड यू वन थिंग, एनीबडी हैविंग सैटर्न प्लस केतु, दे शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी for which they are not responsible. Let's take an example. Maybe you can sponsor somebody's education for a while. Okay, I'll take care of your education. Maybe you buy some books for somebody. So you should be taking care of some other person. That's the Saturn plus Ketu. Saturn हो गया सर आपका. राजपूत जी ने कहा है कि my Saturn is in the 3rd house. It's the same remedy. गर्ली वुमन ने कहा है मतलब चुपचाप सीक्रेटली काम करो. यस, सैटर्न बिलीव्स इन वर्किंग रादर देन टॉकिंग. सैटर्न सेज भाई काम करो, बातें मत करो. ठीक है. समीर सेंस गुरुकुल. ओके सर, यू ओन अ गुरुकुल, दैट्स नाइस. Saturn in the 5th house. See, very nice. Saturn in the 5th house. Let your children go and explore. Okay, do not restrict your children and do not boast about your extracurricular activity. Do not say मैं chess बहुत अच्छी खेलता हूँ. Do not say मैं cricket बहुत अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि फिर कोई लल्ली छल्ली आएगा आपको उसमें हरा कर चला जाएगा. See, Saturn is the ego breaker. Saturn is the ego breaker. It's gonna break your ego. So if you become egoistic about the house where Saturn is, it will come and break that ego. That's the point of Saturn. That's what it wants to do. Okay, remember this. Saturn is gonna break your ego. Wherever is your Saturn, it's gonna break your ego. Okay, if you become egoistic about it. So don't become egoistic about it. Stay down to earth. Next, Rikshit ji ne kaha hai, in case of Saturn retrograde in the 7th house, so don't care about retrograde for now. Even if it is retrograde, you should be following the same steps as I told about Saturn in the 7th house.
सैटर्न थर्ड हो गया है। उसके बाद वैभवी जी ने कहा इट्स रेट्रोग्रेड। व्हाट वाज अबाउट वैभवीज केस? या सो हर सैटर्न प्लस केतु इज इन रेट्रोग्रेड सिचुएशन। सैटर्न इज एट 7 degrees, केतु एट 11। सो या द कर्मा ब्रेक करने के लिए केतु की तरफ सैटर्न आ रहा है, लेकिन सैटर्न इज मूविंग अवे फ्रॉम इट. So in that case, Vaibhavi, what's going to happen to you, that you will be getting a chance of breaking the karma, but you yourself walk away from it. Okay? You yourself walk away from it. आपको कर्म काटने का मौका मिलता है, लेकिन आप वहां से भाग जाते हो. So don't do that. Okay? रोड फ्रीक ने कहा सैटर्न इन द 6th हाउस. या सो यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग. मयंक जी ने कहा सैटर्न इन द 8th हाउस. दैट्स व्हाट वी आर गोना स्टार्ट विद. So, if the Saturn is in the 8th house and you are by chance an astrologer and you get into ego, you will see the worst ending of your business, worst ending of your career, and you will start seeing that your predictions are gonna go wrong. Astrology is the cursed knowledge. ये श्रापित विद्या है, राइट? तो गलती से भी 8th हाउस सैटर्न वाले को इनहेरिटेंस के रिलेटेड कोई बोस्ट नहीं करना है. अरे मेरे पास तो पापा से ये प्रॉपर्टी आ जाएगी. नहीं आएगी. अगर कहोगे आ जाएगी तो नहीं आएगी. स्पेशली 8th हाउस सैटर्न में इन लॉज बहुत अमीर होते हैं और वो कोशिश करता है कि इन लॉज में 2 लड़कियां ही हों ताकि सारी प्रॉपर्टी इनको मिल जाए. ऐसे के केसेस मैंने बहुत देखे हैं. लालची दुनिया है बाहर. लेकिन अगर सैटर्न 8th में है और आप इस तरह के लालच में शादी करा रहे हो तो वो भी नहीं मिलेगा और प्रॉपर्टी भी खराब होगी और फैमिली साथ में खराब होगी. ठीक है? सो डोंट डू दैट. 9th हाउस सैटर्न. Do not boast about your education. Do not say, hey, I'm a doctor. Hey, I'm well educated. Okay? Don't you dare speak to me like that. Don't say like that. Behave like you are an uneducated person. I'm not saying you should start misbehaving. Do not misbehave, but at least do not always use your education at a certain point, right? For example, if somebody is a lawyer and having Saturn in the 9th house, and wherever they go, they start fighting and pretending like, hey, I'm the lawyer in High Court, I'm the lawyer in Supreme Court. Don't do that. You will see the point, आप देखेंगे कि आपका करियर भी खराब होना शुरू हो जाएगा. Okay? I just need a while I'm live. हाँ तो फिर उधर से हाँ राइट. ओके या सॉरी. सो नेक्स्ट थिंग इज आई वाज एट सैटर्न इन द 9th हाउस, राइट? यदि आप अपनी एजुकेशन को यूज करेंगे तो वो मिस यूज करेंगे आप. डू नॉट मिस यूज योर एजुकेशन. इफ योर सैटर्न इज इन द 9th हाउस, you will be seeing decline coming into your career where you are using your education. Okay? Next, Saturn in the 10th house. Do not boast about your career. Do not say, अरे मेरे पास तो ये client है, मेरे पास तो वो client है, अरे मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा. No. Saturn is gonna give you career only on one शर्त. और वो जो वन शर्त है वो यही है कि आप चुपचाप कर्म करो, कर्म के बारे में बातें मत करो. ठीक है? ओके, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, व्हाटएवर योर बिजनेस इज, व्हाटएवर योर करियर इज, चुपचाप 10th हाउस वाला बंदा अगर डार्क में, ओके 10th हाउस सैटर्न, द पर्सन शुड बी वर्किंग ईदर इन द मिड ऑफ द डे और इन द मिड ऑफ द नाइट. If it is retrograde, then it should be mid of the night. If it is direct, it should be the mid of the day. Okay, that's the rule. If the okay, I'm gonna give you one more thing about Saturn. So people watching live, hit that like button because I'm gonna tell you a very great secret about something. Wherever is the Saturn, the time of the Saturn is important. Shani कर्म कारक है. शनि कौन है? शनि कर्म कारक है ना? कर्म का कारक है. और कैप्रिकॉन साइन आपका कर्म है. जहां पर भी कैप्रिकॉन प्लेस्ड होता है या जहां पर भी शनि प्लेस्ड होता है, ये 2 वक्त होते हैं जिस समय आपको काम करना चाहिए, जिस समय आपको कर्म करना चाहिए, कर्म शुरू करना चाहिए या क्लाइंट देखना चाहिए या अपना जो भी एबीसी काम करना चाहिए. That's the time. For example, यदि आप कैप्रिकॉन असेंडेंट हो,
early morning, 6 to 8, the Surya is activating that first house. Right? Sunrise happening from the east. East is the Lagna. Somebody's Capricorn is in the 7th house. Then the person should be working at the time of sunset. सूर्य अस्त वेस्ट डायरेक्शन है ना, सूर्य अस्त के समय आप काम कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is astrologer, that person should be taking clients at evening time. यदि उसका शनि 7th हाउस में है या उसका कैप्रिकॉन साइन 7th हाउस में है, या अगर वो 4th हाउस में है तो मिडनाइट को क्लाइंट्स लो. लेट नाइट, टॉक लेट नाइट टू योर क्लाइंट्स. Okay, start your karma at end of the day. When you are done with the day, do your karma at that time. Nobody's gonna tell you these secrets of astrology. Okay, this is very basic, but remember, basic is advanced, and nobody is gonna teach you basics. That's the worst thing. Okay, if you want to join the basic astrology course, and even if you want to join the advanced astrology course, you're most welcome. We interact a lot, and there are still a lot of live classes pending. So, ये समझ लग गया, जहां शनि है और जहां कैप्रिकॉन साइन है, ये दो टाइम आपको मिलते हैं जिस समय आपको कर्म करना है. टाइम सबको पता होंगे, सुबह 6 से 8 तक फर्स्ट हाउस, 8 से 10 तक 12th हाउस, 10 से 12 तक 11th हाउस, 12 से 2 तक 10th हाउस, 2 से 4 तक 9th हाउस, 4 से 6 तक 6th हाउस, 6 से 8 तक 7th हाउस, 8 से 10 तक 6th हाउस, 10 से 12 तक it has to be 5th हाउस, 12 से 2 तक it should be 4th हाउस, उसके बाद रात को 2 से 4 तक it's the 3rd हाउस, 4 से 6 तक it's the 2nd हाउस, and then again 6 से 8 तक फर्स्ट हाउस. तो जहां पर भी आपका कैप्रिकॉन साइन है या जहां पर भी आपका सैटर्न है, उस टाइम पर कर्म करिए और आप जल्दी रिजल्ट देखोगे. You guys are lucky you are getting to know this at a certain point, because I had to take a lot of time to understand these things, and हमारे गुरुओं ने हमें इतनी जल्दी चीजें नहीं दी थी जितनी जल्दी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ. Now, if the Saturn is in the 11th house, avoid being on social media. And even if you are on social media, keep your accounts private. You will be facing some kind of trouble in your social media life if your Saturn is in the 11th house. I always tell people, if you want to gain more, the people should see you less. Okay. All other people should be seeing you for lesser period of time if you want to earn more money. Even Saturn in the 11th house, avoid लोगों से पिक्चर्स मत खिंचवाओ. कोशिश करो कि लोगों के फोन में आपकी फोटोज ना हो. ठीक है, अपने फोन में खिंचवाओ एंड उनको बाद में सेंड कर दो उनकी फोटोज. अपनी फोटो सेंड नहीं करनी, फोटो शेयर नहीं करनी. दैट्स द 11th हाउस सैटर्न. एंड रिमेंबर, इफ द सैटर्न इज इन द 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन तब जब उसकी जरूरत नहीं रह गई होगी. For example, I want to drive a Lamborghini, but I'm driving Lamborghini in my 40s. I don't want to drive it in my 40s. I want to drive it when I'm 20, when I'm 21, 22. That's when I'm having hot blood, right? Next, if the Saturn is in the 12th house, which is the last house of the zodiac belt, if you are in the foreign lands, that's where your karma is pending. I've seen a lot of people suffering with Saturn in the 12th house, and they are in the foreign land, or they are in some unknown places. When you are in unknown places, that is where your karma is pending. आपका कर्म हॉस्पिटल में पेंडिंग है, आपका कर्म जेल में पेंडिंग है, आपका कर्म कहीं फॉरेन लैंड में लेबर वर्क करने के लिए पेंडिंग है. एंड यू वुड हैव टू डू इट, एंड डू नॉट बोस्ट अबाउट इट. डू नॉट से मैं ते अमेरिका रहना, अरे मैं ते कनाडा रहना, अरे मेरा तो ऑस्ट्रेलिया में अपना घर है. डू नॉट से इट. से बस रोटी पानी जो का गुजारा हो रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट हियर. व्हेन यू स्टार्ट सेइंग बाय रिमेनिंग डाउन टू अर्थ, बट रिमेंबर, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी में रहना है, पर पहले नंबर पर आने के लिए आखिरी में नहीं रहना है. यदि आप आखिरी में सिर्फ इसीलिए रह रहे हो कि लोग आपको फर्स्ट नंबर पर ले जाएंगे, तो नहीं, फिर आपका काम नहीं होगा, बिकॉज योर मेंटल स्टेट इज स्टिल यू वांट टू बी नंबर 1. सो डोंट बी दैट पर्सन. ओके, सो या, दैट्स ऑल अबाउट Saturn in all houses. Let's take the comments. Where was I? Yeah, Saturn and Jupiter in the 8th house. That's good, sir. You have Mayank ji, you have Dharam Yoga. It's really good.
Should I ever talk to my family? Yeah, you should be talking about family. That's totally on you. I have not seen your chart, so I won't comment much. Saturn in the seventh house, that too retrograde. That's good, sir. Work at the time of sunrise and sunset. Saturn moon in the second house. Okay, when the Saturn touches the moon, बहुत सारे लोग ना इसको विष योग समझते हैं. शनि में तो जहर है ही नहीं. Saturn doesn't have the poison, okay? Saturn does not have the poison. I won't say much on it. The day we'll be discussing Saturn plus moon, on that day I'm going to talk about it, okay? How astrology is cursed knowledge. It's a completely different topic in itself, Aditya ji, but yeah. एस्ट्रोलॉजी को श्रापित विद्या कहा गया है. इसके पीछे बहुत वजहें हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे. अनन्या जी ने कहा है Saturn in 11th house in Aquarius sign, 11 degrees, no other planet with the Saturn. Yeah, avoid social media. You hate it, that's good. So avoid social media. Do not meet people over social media. And remember, but your karma is spending social media में. आपका 11th house में very close circle में, आप बहुत बड़ी कंपनी में किसी में शायद काम करते होंगे, या आपका कर्म ऐसी जगह पर होगा कि आप बहुत बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई आईटी कंपनी में जॉब करते होंगे. वैसे का कर्मा भी पेंडिंग होता है. इफ नॉट दैट, देन दे आर जस्ट रेजिंग देयर किड्स, बिकॉज सैटर्न इज डायरेक्टली लुकिंग एट द 5th हाउस फ्रॉम देयर. Saturn is called as a snake. Yeah, sir, that's a complete different thing. विष योग कहा गया है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं. So we'll talk about it in some other video. So yeah, I hope it's clear. A lot of people are watching this video, but very less people have subscribed and very less people have given it a thumbs up. Give it a thumbs up and improve your Jupiter. So yeah, if you need any astrological consultations, you can book now, because the consultation charges are gonna increase on this Diwali, okay? The website is mentioned in the link below in the description. All right, bye bye. Jai Shri Mahakal.